Assalamu alaikum students. How are you all today? मुझे एक बात बताएं, आपके घर में हर रोज़ सफाई होती होगी, है ना? या तो आपकी अम्मी खुद करती होंगी या कोई मेड आती होगी। जब वो सफाई करती है तो आपने नोट किया है कि कितनी डस्ट निकलती है हर कमरे से, है ना? अब आप ज़रा नीचे ज़मीन पर देखें, उधर भी डस्ट है, राइट? And when you go outside to play in the playground or the parks or your gardens at home, do you see dust? I'm sure you do. डस्ट के अलावा एनवायरनमेंट में काफ़ी बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं जो हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं और हम इन जर्म्स से हमेशा एक्सपोज रहते हैं। दे आर डिजीज़ कैरिंग जर्म्स एवरीवेयर। इसलिए हमारी बॉडीज़ को एक बहुत अच्छा और कॉम्प्लेक्स सिस्टम चाहिए होता है टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। The first line of defense or shield in our bodies is the external barriers that protect and defend our bodies from harmful external agents. These barriers include earwax, tears, acid of the stomach, mucus in our mucous membranes, and the skin covering our entire body. The skin is the largest and the most efficient of these physical barriers. These physical barriers prevent the entry of any dangerous particle into our system. Our skin prevents entry of pathogens and harmful particles into the body, and the acids and other body fluids help destroy and flush out any harmful particles that our bodies come into contact with. Other than these physical barriers, if a foreign cell enters our body, then certain cells and chemicals attack them to prevent them from spreading further into our bodies. These special cells are called microphages, which are a type of white blood cells. And their job is to clean our body of microscopic debris and invaders. A macrophage has the ability to locate and eat particles such as bacteria, virus, fungi and parasites. इसके अलावा हमारे बॉडी में एक सिस्टम है जिसका मेन काम है हमें प्रोटेक्टेड रखना। दिस इज़ द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। ये सिस्टम हर डिजीज़, जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस से लड़ता है जो हमारी बॉडी में एंटर हो जाए। दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड द इम्यून सिस्टम। The immune system is not made up of any specific organs, rather, it is spread throughout the entire body. The immune system is basically composed of a number of immune cells that are present all around your body. These cells fight off infections and keep our body safe and protected. इम्यून सिस्टम सिर्फ बैक्टीरिया से नहीं लड़ता, बल्कि अगर हमारी बॉडी कोई हार्मफुल सेल्स बना ले तो ये उनको भी मार देता है। आपने कभी नोट किया है कि जब आपका गला ख़राब होता है या आपको फ्लू हो जाता है तो योर नोज स्टार्ट्स टू बिकम रनी, या जब आप कहीं गिर जाते हैं और आपको चोट लगती है तो चोट वाली जगह रेड हो जाती है और स्वेल भी कर जाती है। ये सब साइंस हैं कि आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। इफ़ यू गेट ब्रूज्ड or if a sharp object hurts you, your body produces an immune response. The site of injury becomes red and swollen and feels warm, which is called inflammation. All these systems are due to the immune response. Our bodies have immune cells that are constantly patrolling around in our bodies like a police force. They make use of the circulatory system for transportation and the lymphatic system for the production of immune cells. Our immune system consists of a system that is closely related to our circulatory system called the lymphatic system. This is sort of like a circulatory system spread throughout the body, but instead of blood, a clear fluid called lymph circulates through the lymphatic system. This lymph contains all the immune cells and protective cells of our immune system. They are majorly white blood cells and they fight infections. And these immune cells are called lymphocytes. There are also some signaling cells that regulate the immune responses called
cytokines. There are further three types of these lymphocytes. The first type is the B cell, जो कि बैक्टीरिया अटैक करता है, वायरस को भी अटैक करता है, जो हमारे बॉडीज़ में घुस जाती हैं by producing antibodies which are protective proteins that attack and destroy the bacteria. दूसरी टाइप को कहते हैं टी सेल्स, और ये वो सेल्स हैं जो हमारे बॉडीज़ के अपने सेल्स को अटैक करता है, which have either been taken over by the pathogenic agents or have developed into cancer cells. ये जो टी सेल्स होते हैं ये हमारे इन्वेडर सेल्स को भी अटैक करते हैं, and they play part in activating other parts of the immune system upon infection. Third type of cells को हम कहते हैं NKC और Natural Killer Cells. इनका फंक्शन ये होता है कि ये हमारे वायरली इन्फेक्टेड सेल्स को मार देते हैं by detecting and controlling early signs of cancer. इनको एक्टिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये केमिकल्स खुद रिलीज़ करते हैं जो कि टारगेट सेल्स तक पहुंचते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. Both T and B cells are activated when the system detects some substances from foreign cells in the body. These cells produce two types of cells as a response to any function. One kind of cell go and attack the invading cells called the effector cells, and the other cells called the memory cells stay inactive for long periods in our bodies, and they come in use if the same infection is encountered later on in life. These memory cells then produce a much faster response when the infection occurs for the second time, thus making us immune to those pathogens. This immunity that is acquired over time due to infections is called acquired immunity. इसके अलावा हम अपनी बॉडी में इम्यूनिटी खुद इंजेक्ट भी कर सकते हैं. इनको हम वैक्सीन्स कहते हैं. वैक्सीन्स बेसिकली वायरस का बहुत ही वीकेंड फॉर्म होती हैं. दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी. क्या आपको पता है, हमें जब बुखार होता है तो वी ऑलवेज थिंक ऑफ फीवर एज अ बैड थिंग, बट असल में फीवर भी हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है. जब हमारी बॉडी में कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है तो हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है और इसकी वजह से बैक्टीरिया स्लो हो जाता है. दिस हेल्प्स द इम्यून सेल्स बाय गिविंग देम मोर टाइम टू फाइंड एंड डिस्ट्रॉय द पैथोजन सेल्स. लेट्स टेक अ लुक एट दिस वीडियो टू सी हाउ द इम्यून सिस्टम वर्क्स इफ सम बैक्टीरिया एंटर्स आवर बॉडी टू वाइंड अप आवर लेक्चर. चलें, अब हम इस एपिसोड के कुछ मेन पॉइंट्स पर गौर करते हैं. नंबर 1, the main parts of the immune system are white blood cells, antibodies, and the lymphatic system, the spleen. Number 2, the tasks of the immune system to fight disease-causing germs, pathogen like bacteria, virus, parasites, or fungi, and to remove them from the body, to recognize and neutralize harmful substances from the environment, and to fight disease-causing changes in the body, such as cancer cells. Number 3, the immune cells are present in lymph all over the body. अब हम अपना quiz लेंगे to see how much we have learned from our lesson today. Question number 1. Which of the following immunity is obtained during a lifetime? A. Acquired immunity. B. Active immunity. C. Passive immunity. D. None of the above. The correct answer is A. Acquired immunity. Question number 2. Which of the following protects our body against disease-causing pathogens? Option number A. Respiratory system. Option number B. Immune system. Option number C. Digestive system. Option number D. Respiratory system. The correct answer is option number B. Immune system. Question number 3. Increased asthmatic attacks in certain seasons are due to option number A. Inhalation of seasoned pollen. Option number B. Heat and humidity. Option number C.
Low temperature. Option number D. Eating preserved fruits. The correct answer is option number A. Inhalation of seasoned pollen. Question number 4. Macrophages are derived from option number A. White blood cells. Option number B. Liver cells. Option number C. Mast cells. Option number D. Basophils. The correct answer is option number A. White blood cells. Students, with this, we come to the end of our episode. Take care and always remember to stay curious.